सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन बिहान 10 बजेदेखि। Salutation, Pranam, Namaskar. Brahma Buddha makes the God to all men and women of the world from the Ram Gita. राम गीता के अनुसार ब्रह्म बोध से सभी आदमी को भगवान बनाता है। रामायण से, आध्यात्म रामायण से, वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन है राम गीता का, वो राम गीता को अच्छी तरह से जानने से हम लोग सब जनाना मर्द सब भगवान में बदल सकेंगे, भगवान में बदलेंगे ब्रह्म बोध के ज्ञान से जो राम गीता में उपलब्ध है। राम गीता में जो ब्रह्म बोध छ, यो ब्रह्म बोध जानेर संसारका हामी सबै पुरुष महिला सबै भगवानमा बदलिन सक्छौं। From Ram Gita, from the knowledge of Brahma Bodha, we can be God. We all men and female of the world. It's true. यो सत्य हो। राम गीताबाट हामी सबै ब्रह्म बोध गरेर भगवानमा बदलिन सक्छौं। ब्रह्म बोध हुन्छ ब्रह्म विद्याबाट। ब्रह्म बोध happens from Brahma Vidya, Brahma education. Brahma means consciousness, intellect. Brahma means supreme reality, that is self-realism. Self-realism is the realism of God, who always remains because it is soul, Atma, Brahma. Atma Bodha of Shankaracharya and Ram Gita not different in the meaning for Atma Bodha. The first Shankaracharya, his book Atma Bodha and Ram Gita, not different to know Brahma Gyan, Brahma Bodha, Atma Bodha. We are really only soul. Soul means immortal, not mortal. Brahma Bodha happens from Brahma Vidya, Brahma education. Brahma Bodha means
only known about Brahma. Brahma we are. We are Brahma. That is the meaning of God. That is the meaning of Sushupti. Sushupti. This word is from Brihadaranyaka Upanishad. Brihadaranyaka Upanishad, the supreme philosophy of Vedanta. The supreme philosophy of Vedanta. वेदांत को दर्शन बृहदारण्यक उपनिषदमा सुषुप्तिको कुरा छ. That is mean of God. सुषुप्ति means सच्चिदानंद का अनुभव. सच्चिदानंद का अनुभव सुषुप्ति से हम लोग कर पाते हैं. सुषुप्ति का अनुभव, the experience of sound sleep. Sound sleep. The experience of sound sleep is the experience of God. It is true. Evidence is Brihadaranyaka Upanishad. साक्षी बृहदारण्यक उपनिषद छ. सुषुप्तिको अनुभव भगवानको अनुभव हो भन्ने कुरामा बृहदारण्यक उपनिषद साक्षी छ. So, Sushupti, the experience of Sushupti is the experience of Pashupatinath. Experience of Pashupatinath is the experience of Sushupti. That is the experience of Sachidananda, Sat Chit Ananda, Sat always remaining, never ends, always remaining, सधैं रहने जो सत हो. चित्त, चित्त means enlightenment, प्रकाश, स्वयं प्रकाश, self light. God has self light, self enlightenment, and always pleasure. Satchidananda, always pleasure. Satchidananda is the name of Shiva. Lord Shiva Mahadev. The experience Satchidananda. Because Satchidananda is Shiva, Shiva is Satchidananda. Satchidananda is Pashupatinath, Pashupatinath is Shiva, Satchidananda. Shiva नहीं पशुपतिनाथ हो, पशुपतिनाथ नहीं शिव हो, शिव नहीं ब्रह्म हो. शिव को अनुभव सुषुप्ति को अनुभव हो. सुषुप्ति को अनुभव हो हामी सबैको निजी स्वरूप. निजी स्वरूप, इमोर्टल नेचर आवर्स, हम लोग का अपना हरदम का निजी स्वभाव है. केवल आत्मा, ओनली सोल. दैट मीन्स ब्रह्म बोध. इन ब्रह्म बोध नो इग्नोरेंस. ब्रह्ममा अज्ञान छैन. So from ignorance cannot come coming going world. आए जाए वाला संसार ब्रह्म बोध में नहीं है.
आए जाए वाला संसार ब्रह्म बोध में नहीं है. कमिंग गोइंग वर्ल्ड नो इन ब्रह्म. ब्रह्म अपना स्वरूप है, सबका स्वरूप है ब्रह्म. ब्रह्म मीन्स राम, राम मीन्स ब्रह्म, ब्रह्म मीन्स शिव. According Vedanta philosophy, Shiva is Brahma, Brahma is Shiva. वेदांत दर्शन अनुसार ब्रह्म ने शिव हो, शिव में ब्रह्म हो. Our actual nature, immortal nature is Brahma. ये आज का हम लोगों का लिसन है, पाठ है. टुडे मीन्स विक्रम संवत 2081 साल, 2081 years according Vikram Samvat month just first, just एक गते. Today is Tuesday, मंगलवार. आज मंगलवार है. अंग्रेजी तिथि, अंग्रेजी डेट 2024, month May, date 14, date Tuesday. According Hinduism, according Tithi, Vaishakh Shukla Paksha, today also Shashti Tithi, today also, yesterday also was. This is coming from by Balaram GC, title Adit Pradip Saraswati, the president of Akhanda Sukha Kendra from Nepal country, where is highest Himalaya, where is the birth of Buddha, that is Nepal. This program we listening, we telling from Nepal, from Bhairava city, through a radio, FM, Rupandi FM, from Bhairava, the Mukti FM radio from Budol, and Srinagar FM from Palpatansin, the radio Parasi FM from there. From here we are listening and telling about the God. Our actual nature is God. We actually are immortal. We belong to God. Actually we have no relation of death. We have no relation with the death. So death comes body. Actually we have no relation of body because that dies. Actually we have no relation with the world because that ends, finishes, not lives long. That is mortal. And that body all comes from ignorance. Tradition of ignorance, generation of ignorance. Ignorance comes if we don't Brahma Bodha. If we don't know about God, then comes ignorance. From ignorance comes changeable
and transmigration nature of the world. So we are actually God. We know this from Ram Gita. We can be from Ram Gita. We all, men and women of the world, can be God from Ram Gita. It is true. ये सच है, राम गीता के माध्यम से हम लोग भगवान में बदल सकते हैं, क्योंकि वहां ब्रह्मबोध है। ब्रह्मबोध ब्रह्म विद्या से प्राप्त होता है। इसी कारण ब्रह्मबोध दिखाने के लिए भगवान शिव महादेव ने वाल्मीकि रामायण से राम का वर्णन किया। फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, संसार के भलाई के लिए। अभी समय खत्म होने जा रहा है। इट्स टाइम टू बी एन्डिङ। अहिले समाप्त हुन गइराखेको छ। अहिले यति नै गरौँ। हरि ओम तत्सत।